In other news, we are tracking this afternoon, a day after Sri Sri met the litigants of Ayodhya dispute. Sri Sri was in Lucknow. He met with All India Muslim Personal Law Board member Khalid Rashid Firangi. After the meeting, Sri Sri said that he was hopeful of a solution, adding that the push for talks between communities over Ayodhya dispute is not any sort of an agenda. This would be today the last meeting that Sri Sri is having, but many more meetings could take place in time to come. In some big news that's coming in right now, where the entire negotiations and talks over Ram Mandir issue is concerned, the Shia Waqf board should to jointly file affidavit supporting Ram Mandir cause in Supreme Court. Interesting news that's coming in. Now the Shia Waqf board has hammered out an agreement with the Akhara Parishad on Ram Mandir dispute. The Shia Waqf board had come out in support of Ram Mandir, but the Shia law board had slammed it, saying that they don't represent the Shia community. Interesting developments that are taking place. We have been trying to speak with several stakeholders on this, but a division within the community is quite apparent right now. Let's go across to my colleague Tangshu, joining us with further inputs on this. Please go ahead. Well, yes, indeed, Akshay. The Shia Waqf board is being quite closely associated with attempts to resolve the Ram Mandir dispute, at least when it comes to this latest attempt, which has been headed by Shri Ravi Shankar here. So, from what we understand, Shia Waqf board spokesperson Wasim Rizvi has just spoken to us a few minutes back, and he has confirmed that the Shia Waqf board, along with the Nirmoy Akhada, will file a joint proposal in the Supreme Court shortly before the deadline mandated by the Supreme Court, which is on December 5th. And in the joint proposal, they are going to indicate that yes, they are engaged in dialogue and discussions to come up with an amicable solution to the Ram Mandir dispute. This is what the court had asked for. The court had directed the parties to come up with a solution by themselves as the first choice option, and we understand that's exactly what's going to be happening. A joint proposal is going to be filed in which they are at least going to say that yes, we are in talks to try and come up with a solution. Now the point is, the fly in the ointment, as you pointed out, is the fact that while the Shia Waqf board is in favor of an amicable solution, the All India Personal Law Board, All India Shia Waqf board, the All India Shia Personal Law Board is not in favor of any talks. That's right. Says that only the courts can come and resolve the matter. That's right. So, of course, there's multiple parties, but many divisions within these organizations and parties also right now. Some are okay with this mediation, and while several of those are not okay with the intervention of Sri Sri into the entire matter, saying they'll only rely on what the apex court has to say. Let's also bring in our colleague Jaiseelan joining us over the telephone line. Jaiseelan, in latest news that's coming in, there is going to be an affidavit now that's going to be submitted in the Supreme Court. We understand it's a matter of few days when the Supreme Court will take up the matter on a daily basis where the Ayodhya dispute is concerned. Shia Waqf board and Akhil Bhartiya Akhara Parishad are jointly now to file an affidavit supporting the Ram Mandir cause in Supreme Court. That's right. This comes very closely on the heels of actually Sri Sri trying to mediate between the warring parties as far as the Ram Mandir is concerned, and trying to, hammer out an out-of-the-court settlement. We do not know how successful that will be, but during the course of the interaction with the press yesterday, Sri Sri exuded confidence that, it will of course work out. It is doable, even though it appears to be a bit difficult, and he, counseled patience. So we'll have to wait and watch how things shape up. But, the view that is gaining ground as of now is that many Muslims, in fact, are in favor of actually, getting the Ram Mandir constructed. But there are, of course, people who also on both sides of the camp who believe that it cannot be done through talks. It can be done only through, a court verdict. So we'll have to wait and watch how things shape up in the coming days and weeks, especially once the hearing begins on a day-to-day basis in the Supreme Court. All right. Thanks very much for joining us for a moment, Jaiseelan. Many reactions coming in. हम कोई एजेंडा लेके नहीं चल रहे हैं, हम एक रास्ता खोज रहे हैं, इसलिए आप लोग समय दीजिए, बहुत जल्दीबाजी मत करिए। हम लोग सब मिलके सभी लोगों से बातें करेंगे। इसमें सिर्फ 2 जनों की बात नहीं, 10 जनों की बात नहीं, काफी लोग, रहनुमा के लोग, धार्मिक लोग इकट्ठे होंगे, सबसे बातचीत होगी। मुझे पूरा विश्वास है देश के लिए कुछ बहुत बड़ा चीज इससे निकलेगी। Let's now bring in Sayyid Wasim Rizvi of the Shia Waqf board, who's joining us over the telephone line. Mr. Wasim Rizvi, you've met with Sri Sri on several accounts, and now we understand that the Shia Waqf board, along with the Akhil Bhartiya Akhara Parishad, is to jointly file an affidavit in the Supreme Court supporting the Ram Mandir issue. जी बिल्कुल
देखिए श्री ने जो अभी बात कही उसकी आखिरी लाइन का हम सपोर्ट करते हैं कि बहुत जल्दी हिंदुस्तान के मफाद में ये मसला हल होने जा रहा है। बिल्कुल उनका विश्वास है और उसका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। देखिए शिया वक्फ बोर्ड ने, क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड का अकेला कस्टोडियन है, क्योंकि ये वक्फ संपत्ति, देखिए मैं थोड़ी सी आपको एक बात बता दूं। हाईकोर्ट ने जो 3 पार्ट में इसको बांटा है जी, कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि लोग ये कहते हैं कि एक पार्ट सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया है, क्योंकि गलत फीडिंग है। सुन्नी वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट में नहीं लिखा है, वहां पे लिखा है मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम में अकेला सुन्नी समुदाय नहीं होता, मुस्लिम में शिया समुदाय भी है और वो भी है। एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि उसी ऑर्डर में जिसमें मुस्लिम को पार्ट दिए गए हैं, 2 जजों ने दिए हैं, तो वहां पर जो अल्फाज मुस्लिम इस्तेमाल किया गया है वो 2 जजेस ने किया है। तो अब एक चीज और उन 2 जजों ने सुन्नी वक्फ बोर्ड 1944 से जब से इसको सुन्नी मस्जिद कहकर आया है, या दूसरी और इसमें पार्टी हाकिम अंसारी एंड अदर्स सब सुन्नी समाज से हैं, वो सब सुन्नी समाज को ही क्लेम करते हैं। तो जब वो नोटिफिकेशन 1944 का सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर कर चुके हैं, तो फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड इस मामले में कोई उनको अधिकार नहीं है। ओके, ये जो पॉइंट आप कह रहे हैं वसीम रिजवी जी, या पहले भी कह चुके हैं दैट सुन्नी वक्फ बोर्ड का इसमें कोई दे नॉट भागीदारी इन द एंटायर डिस्प्यूट। बट आई वांट टू आस्क यू समथिंग मिस्टर वसीम रिजवी, इन द लास्ट 48 आवर्स काफी मीटिंग्स हो चुकी हैं दोनों साइड, वेदर इट इज द हिंदू साइड, द मुस्लिम साइड, विद इन हिंदू सेवरल अखाड़ाज, within Muslims, several bodies, for example, the All India Muslim Personal Law Board, Sunni leaders say, Shia leaders say, आप कह रहे हैं कि there is a joint affidavit जो Supreme Court में submit होने वाला है। किस दिशा में, in which direction is this joint affidavit really going? What is it indicating? देखिए ऐसा है कि हमारी इस मामले को लेकर शिया वक्फ बोर्ड ने जो हिंदू पक्ष के लोगों से बातें की हैं, उनके जिम्मेदार लोगों से, अखाड़े के लोगों से और जो उनके मुख्य लोग हैं उनसे जो इसमें बात की है, आपस में डायलॉग किए हैं, उन चीजों में जो रिजल्ट निकले हैं उसको, जिससे हम भी सहमत हैं और वो भी सहमत हैं। नो, आर देयर मल्टीपल रिजल्ट्स? बिकॉज ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये मल्टीपल प्रपोजल्स हैं या एक एफिडेविट में एक वन सिनारियो, पॉसिबल सिनारियो दिया जा रहा है, मल्टीपल सिनारियोज दिए जा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। किस दिशा में, इन विच डायरेक्शन रियली इज दिस एफिडेविट गोइंग? इज दिस गोइंग इन ऑफ अ फाइनल रेजोल्यूट टू द एंटायर प्रॉब्लम बिटवीन व्हाट द शिया वक्फ बोर्ड एंड ऑफ कोर्स द अखाड़ा इज सेइंग? वेयर इज इट हेडेड? देखिए कोई मल्टीपल प्रपोजल नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल फाइनली एक प्रपोजल दिया जा रहा है जिसमें साफ ये है कि अयोध्या और फैजाबाद में कोई मंदिर का निर्माण नहीं होगा, कोई मस्जिद का निर्माण नहीं होगा, सॉरी, सिर्फ वहां पर जो हिंदुओं की आस्था है, जहां पे राम मंदिर का डिस्प्यूट है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का निर्माण होगा। मुस्लिम आबादी में, जो कि अभी हम लोग तय कर रहे हैं, मुस्लिम आबादी में एक मस्जिद का निर्माण होगा जो कि शिया समाज के लोगों के लिए होगा, ठीक है, मुसलमानों के लिए होगा। उसमें नमाज पढ़ने में किसी को कैद नहीं, कोई भी आगे पढ़ सकता है, लेकिन वो शिया मस्जिद। बट दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग रिजवी जी। ये अंडरस्टैंडिंग तो खैर सिर्फ फिलहाल देखा जाए 2 ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में है, जो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो गई, बट देयर आर मल्टीपल पार्टीज, मल्टीपल डिस्प्यूट्स जो अभी तक क्वेश्चन करते हैं कि श्री इस इंटरवेंशन में क्या कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट ओके विद दिस इंटरवेंशन एट ऑल। हम आपसे दोबारा बात करेंगे, पर फिलहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर रिजवी फॉर स्पीकिंग विद अस। सम न्यूज दैट्स कमिंग